So, dear students, we are dealing with the chapter that is organometallic compounds. I will continue with the remaining part of that organometallic compound. So, first of all, I would like to welcome all the students and the audience. So, we are dealing with the organomagnesium compounds. Organomagnesium halides, they are called as Grignard reagents. Organic halides of magnesium, they are called as Grignard reagents. They are named after the chief investigator, the scientist who investigated them, named as Victor Grignard, who got Nobel Prize in 1912. These Grignard reagents, they are used as synthetic reagents. Means starting from these organometallic compounds, organomagnesium compounds, you are able to synthesize, you are able to prepare large number of compounds. So these Grignard reagents, they are highly reactive. Therefore, they are used in the preparation of various type of compounds. Large variety of compounds they may be prepared from this organic compound. Therefore, we are going to study these organic compounds. Now, which type of compounds they may be prepared? Suppose you may prepare alkanes, alcohols, aldehydes, ketones, and carboxylic acids. Their general formula is RMGX or RMGX, where R is alkyl group or aryl group. This R group, it may be alkyl group or aryl group. Aryl group means it may be aromatic, just like phenyl or naphthyl group. And X, it may be equal to chloride, bromide, or iodide. Okay, comes next. Sorry. Now, how they are prepared actually? Now, Grignard, they are prepared in the laboratory by the action of alkyl halides on magnesium metal in presence of dry ether. We have studied in the last period this alkyl halide, it is reacted with magnesium metal, magnesium ternins in presence of solvent ether. Dry ether it is used. Dry ether means, yes, what do you mean by dry? Yes, what do you mean by dry? Dry means which is free from moisture. It should not contain any trace amount of moisture. उसके अंदर में कोई नमी नहीं रहना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं रहना चाहिए. इसके लिए हम उसको अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं. ठीक है, ओवन के अंदर भी रखते हैं, हॉट ओवन के अंदर भी हम रखते हैं उसको, कभी उसको डिस्टिल करते हैं. अलग अलग केमिकल्स को ड्राई करने का अलग अलग तरीका होता है. So this dry ether, it is used. Pure anhydrous. Anhydrous means without, which is not containing any water molecule. Hydrous means water. Anhydrous, which is not containing any water molecule. So this ether and all these contents, they should be almost free from the moisture. Why they should be free from moisture, I have discussed in the last period. Okay. So in this way, in the laboratory, it is prepared by the action of alkyl halide on magnesium metal. Alkyl halide, it is reacted with magnesium metal in the presence of solvent ether, and it is allowed to reflux. Reflux means boiling at constant temperature. You will get RMGX. Suppose you take methyl iodide, it is reacted with magnesium metal in presence of dry ether, and it is refluxed. You will get methyl magnesium iodide. If you take bromide, ethyl bromide,
then you will get ethyl magnesium bromide. Now here alkyl iodides, they are more reactive than bromides. Iodides, alkyl iodides, whatever are there, they are more reactive than bromides, which are in turn more reactive than chlorides. Means alkyl iodides, they are more reactive than bromides and chlorides. Therefore, alkyl bromides are most suitable for the preparation of Grignard reagents. These alkyl iodides, they are more reactive than bromides. Okay, and these bromides are more reactive than as compared to chlorides. Therefore, we take bromides. Most of the reactions you will observe that we use bromides because they are more reactive as compared to the iodides and the chlorides. Now this is the figure for the preparation. This is our round bottom flask. In the round bottom flask, we have placed this magnesium turnings, pieces of the magnesium metal, which are suspended in dry ether. Okay, this is the cork. With the help of cork, this is the water condenser. This is the inlet for water. Okay, from this side, the flow of cold water, it will come in. Okay, this is the outlet for water. By means of this cold water, whatever this content are there, they are kept cold. Okay, vapors, whatever are there, they will come here and they will come into the pipe of condenser, internal pipe of condenser. Okay, these vapor, they should not escape out. Therefore, a current of water is passed here. क्या होता है यहाँ पर? वाटर का करंट होता है, वाटर का बहाव होता है, तो फ्लो ऑफ वाटर की वजह से इंटरनल जो पाइप जो दिख रहा है ये कोल्ड रहता है. इट इज केप्ट कोल्ड. So whatever vapors they are collected here, they will trickle down in the this round bottom flask. तो यहाँ पर जो भी वेपर्स कलेक्ट हो रहे हैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, यहाँ पर वो कूल हो जाएंगे और कूल होने के बाद फिर इसी के अंदर ट्रिकल डाउन हो जाएंगे, टपक जाएंगे. ओके, एंड हियर stopper funnel is there, dropping funnel. This dropping funnel, it is containing alkyl halide which is dissolved in dry ether. Okay, this is the dropping funnel. This dropping funnel, what does it contain? Alkyl halide. This alkyl halide which is dissolved in dry ether. Okay, so in this way, here magnesium turnings, pieces of magnesium dissolved in dry ether. What is this? This is dropping funnel. What does it contain? Alkyl halide which is dissolved in dry ether. Okay. Now I have discussed how it is prepared, and keep in mind that whatever this alkyl magnesium halide they are prepared, they should be used. They should be utilized as soon as prepared. Whenever you have prepared or whenever required, it is prepared at that time only. जब आपको जरूरत है जब भी आप उसको तैयार करेंगे, तैयार करके रखेंगे नहीं, because it may be attacked by any trace amount of moisture वगैरह का उसके साथ में कांटेक्ट होता है, तो बहुत जल्दी वो रिएक्ट हो सकता है. आगे हम देखेंगे इमीडिएटली अगर वाटर के साथ में इवन मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन होता है तो आपको अल्केन फौरन ही दे देता है. So let us look at the physical properties. Many times we discuss the physical properties. So what do you mean by physical properties? Yes, anyone? क्या मतलब होता है physical properties का? Yes. What do you mean by physical properties? This is a discussion. This is the session for discussion. Yes. Amount, color, size. Okay, very good. कौन जवाब दे रहा है? Yes. शेख तहरीम सर. शेख तहरीम. जी. Physical means which can be seen. Okay. Physical यानी तबाई which can be observed with the help of naked eyes. ठीक है.
जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल अपीयरेंस बोलते हैं ना, many times we use this term physical appearance. Look at your physical appearance. आप अपने तरफ देखिए, थोड़ा किस तरह नजर आ रहे हो, देखिए थोड़ा सा, बोलते हैं, ठीक है। जो दिख रहा है तो किस तरह से दिखता है ये, इसके बारे में हम देख रहे हैं। हाउ डज इट लुक लाइक? सो Grignard reagents, they are non volatile, they are not, they are the volatile नहीं होते, ठीक है। They are colorless solid or liquids. They are seldom isolated in the free state on account of their explosive nature. They are isolated, they are separated in free state due to their explosive nature. Therefore, for synthetic purposes, Grignard reagents, they are always prepared and used in dry ether solution. एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको सिंथेटिक पर्पस के लिए हमेशा ईथर के अंदर में प्रिपेयर करके रखते हैं, ठीक है। Now let us look at the chemical properties. Now here carbon magnesium bond in Grignard reagent is covalent in nature. Covalent means this bonding electron pair, it is equally shared between two atoms, okay, but it is highly polar in nature. Polar means it is having opposite charges. What is the reason? The carbon atom in this or any organometallic compound, it is more electric negative as compared to the metal atom, okay. Therefore, electrons of CMG bond or CM bond, this bond, they are drawn or they are attracted towards the carbon atom. This electron bonding electron pair, it is attracted towards carbon atom due to high electronegative power of this carbon atom. Therefore, the carbon atom will have delta negative charge and magnesium atom will have delta positive charge. Therefore, carbon atom has a partial negative charge, that is called as a delta negative charge, and the magnesium atom has a partial positive charge, or that is called as a delta positive charge. In this way, this is carbon atom alkyl group having delta negative charge and magnesium atom with delta positive charge. Therefore, the alkyl group in Grignard reagents, these are electron rich. They are electron rich. So therefore, they can act as carbanions or nucleophile. They can act as a nucleophile. Nucleophile means electron rich reagent. Nucleo means nucleus. Philes means attraction. A reagent which has attraction towards the nucleus. Nucleus has a positive charge. So negatively charged reagents or neutral reagents, they may have those reagents which are neutral, but they have electron pair with themselves. They can act as a nucleophile. So they would attack polarized molecules at a points of low electron density, where they will attack at the molecules where electron density is low. Okay, yes. In the molecule, if a molecule is there, it is having delta positive charge. Then such type of atom with delta positive charge means low electron density. It will be easily attacked by these nucleophiles. Okay. Thus, characteristic reactions of Grignard reagents are nucleophilic substitution and nucleophilic addition. These are the characteristic reactions. One is nucleophilic substitution, other is nucleophilic addition. Okay. What do you mean by substitution? Yes. At first year, second year, we have studied in detail SN1, SN2. So what do you mean by substitution? Yes. Yes. Nucleus का breakdown separation. No. Substitution means replacement. It is replaced. Okay. Now, so these are two types of reaction. Grignard reagent, it will show nucleophilic substitution and nucleophilic addition reaction. Let us look at the nucleophilic substitution.
Now this is a reagent AB. Now it has a delta positive charge here. It has a delta negative charge. So this atom with delta positive charge. It is not shown here. So it will be easily attacked here, leading to the formation of Ra. And what is remaining? MgX. This will be having delta negative charge. Okay. So MgXB. This is the addition compound. So Grignard reagents undergo substitution reactions by the following general mechanism. So this atom, it is substituted. Okay, MgX, it is substituted by means of A. So Grignard reagents, they undergo replacement reaction by this mechanism. Okay. Now second type of reaction is addition reaction. How does it add? Now carbonyl compounds, they may be attacked by Grignard reagents to form addition products. This is a carbonyl compound. It has a delta negative charge. This is electron pair, bonding electron pair. One is sigma, other it is pi. Pi bond, bonding electron pair. It will be more attracted towards oxygen being of electronegative. So this will have delta positive and this will have delta negative charge. So this is a center with low electron density. So it will be easily attacked by our nucleophile, that is alkyl group. So it will attack here, leading to the formation of addition product. So carbonyl compounds, they are easily attacked by the Grignard reagents to form addition products. This is the addition product. Means just addition of two things. It will lead to the formation of addition product. So this addition always proceeds. It always occurs in such a way that positive part of Grignard reagent, it combines with the oxygen atom of the carbonyl group. Okay, this positive part, it will get attached to the negative part of the addition compound, carbonyl group. Okay, this is the positive part. It will get attached to the negative part. Okay, in this way, there will formation of addition product. Now this addition product, it is subjected to hydrolysis, acid hydrolysis with the help of acid. Okay, what will happen there? This bond will break from this point, H and OH here. H and OH. Here it will break. It will add up this ROH. Okay, this OH. What is remaining? OMGX and OH. Okay, here is that yes, MgOXH. Okay, in this way, Grignard reagents, it combines with the carbonyl compounds. There is formation of addition product, and addition product on hydrolysis, it leads to the formation of alcohol. Okay. Now Grignard reagent, okay. Now Grignard reagent, now this reaction will be utilized again. In further steps, this reaction will be utilized. You should remember what is formed there. Okay. So Grignard reagent react with variety of compounds, giving
almost entire range of organic substances. Large number of variety of compounds they may be synthesized. अलग अलग compounds के साथ में इनकी reaction होती है. Large variety of compounds, organic compounds हम तैयार करते हैं. Now reaction with compound containing active hydrogen compound. जैसे कि मैंने कहा है, ठीक है, अभी हमने अल्डिहाइड्स की रिएक्शन देखी है, ठीक है, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. नाउ अल्डिहाइड्स अ कार्बोनिल कंपाउंड, आगे चलते हैं थोड़ा, सॉरी है. So this Grignard reagent, they react with formaldehyde. Formaldehyde reacts with Grignard reagent to give addition product, which on hydrolysis give primary alcohols. इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये हमारा HCHO है, इसको फॉर्माल्डिहाइड या फॉर्मेलिन भी कहते हैं, फॉर्माल्डिहाइड HCHO. This is delta positive, delta negative. So this is our RMGX. It reacts with formaldehyde. What is formed? This is our addition product. This is unstable, so therefore it is written in the square bracket. Unstable होता है, इसको आइसोलेट करना, इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक, इसलिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेंगे, ठीक है. ये H, HC, 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 H, okay, and this CH3 is attached here, CH3, MgI, ठीक है, MgI, ठीक है. And the next step, this is acid hydrolysis. So acid hydrolysis क्या देता है आपको, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है. This will break from this point, ये पॉइंट से ब्रेक होके क्या मिल जाएंगे आपको, H, ये H, ये C, CH3, and this will be replaced by means of H, ठीक है, OH plus what is remaining now, बाकी क्या रहा, yes, this MgI and OH, ठीक है. In this way Grignard reagents, they react with formaldehyde so as to give primary alcohol, ठीक है. अगले स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं हम whether I have taken this content or not. So okay, I have not taken that content, okay, but continuing with the same, okay. So formaldehyde, it react with Grignard reagent, or Grignard reagent react with formaldehyde, leading to the formation of addition product, which on hydrolysis gives the primary alcohol, for example ethyl alcohol. If you replace this H by means of R, अगर आप इसको R को रिप्लेस, H को रिप्लेस करके R लगा लेते हैं, तो क्या बन जाता है ये कंपाउंड यहाँ पर, यस, H को रिप्लेस करके आप R लगा रहे हैं यहाँ पर, तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ कंपाउंड, RCHO, yes, yes, anyone, ये aldehyde बोल रहे हैं, that will be formaldehyde, we are calling, that will be called as simple aldehyde, ठीक है. तो यहाँ पर R अगर आप, if you are replacing this H by means of any alkyl group if you are taking, then same type of addition product it will be formed. This H will be replaced by means of R, okay. Here again it will be R, okay, and this will be, this H will be replaced by means of R, means there will be two alkyl groups. Two alkyl groups means it will be secondary alcohol, okay, it will be secondary alcohol. So in this way, this Grignard reagent, it reacts with aldehydes other than formaldehyde. Formaldehyde को छोड़कर दूसरे जो aldehydes उनके साथ में जो रिएक्शन होती है उसमें क्या फॉर्म होता है, सेकेंडरी अल्कोहल. दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल.
ठीक है, तो फॉर्माल्डिहाइड और Grignard reagent, it reacts with formaldehyde to give primary alcohol. It reacts with aldehydes other than formaldehyde to give secondary alcohol. ठीक है, here secondary alcohol will be formed. ये H रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पर दूसरा R ग्रुप अगर लगाएंगे. And if you replace both hydrogen atoms, अगर आप दोनों भी हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर रहे हैं, that will be ketone. ओके, अगर दोनों भी हाइड्रोजन एटम को आप रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो दिस विल बी R, C डबल बॉन्ड OO, दिस विल बी R. ओके, so that will be ketone. Now this Grignard reagent, it will react with ketone. What will you form here? Yes, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? Yes, सभी टाइप के रिएक्शंस में देखिए यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट तो सेम रहेगा. ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म दिया, यहाँ पर R आ जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा. ठीक है, here it will be R, here it will be R. ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर में क्या आ जाएगा? दिस H will be replaced with means R, R. ठीक है, so product will be containing 3 alkyl groups, R, R, and this is R. So such type of alcohol which is containing 3 alkyl groups, it is called as, yes, क्या बोलते हैं ऐसे अल्कोहल को हम, जिसमें 3 अल्किल ग्रुप्स अटैच हुए एक ही कार्बन एटम को. यस, इट इज कॉल्ड एज ए टर्शियरी अल्कोहल. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ए टर्शियरी अल्कोहल. ठीक है, तो Grignard reagent react with the ketones to give addition product. Addition product which on hydrolysis gives tertiary alcohol. ठीक है, तो एक ही रिएक्शन का बेस लेके हम उसके ऊपर से 3 रिएक्शन डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में अगर रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है? प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दूसरे एल्डिहाइड्स आप अगर लेते हैं, जैसे H को रिप्लेस कर दिया R से, CH3 ग्रुप से, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है, और अगर दोनों हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्लेस कर दिया तो ये बन जाएगा कीटोन. कीटोन को अगर Grignard reagent के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है आपको? यस, टर्शियरी अल्कोहल. वेरी गुड, टर्शियरी अल्कोहल. ठीक है, तो याद रखिए, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करेंगे फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल. ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द रिएक्शन. पीछे के रिएक्शन के compounds containing active hydrogen atoms. By active hydrogen atoms, we refer to those compounds which are more acidic than alkanes. ऐसे compounds के बारे में हम सोचते हैं जो अल्केन से थोड़े, जिनके एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो. तो कौन से कंपाउंड्स है वो? वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अमाइंस हो सकते हैं. तो ये सब कंपाउंड्स में क्या होता है? हाइड्रोजन एटम एक्टिव होता है. ठीक है, so these compound react with Grignard reagent to form alkanes. ठीक है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि whatever Grignard reagents का जब हम प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो whatever assemblies you are taking, जो भी apparatus ले रहे हैं, they should be almost dry. They should not contain even a trace amount of what you say moisture. उसके अंदर में थोड़ी भी नमी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी भी नमी रह रही है तो that compound will react with water, leading to the formation of alkane. तो हमारा जो कंपाउंड डिजायर्ड बनाना था वो कंपाउंड नहीं बन पाएंगे. इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि कंपाउंड शुड बी ऑल assemblies and whatever reactants you are taking, they should be dry, very much dry. Now this is our iodide, methyl magnesium iodide. Now this is the active hydrogen atom here. ठीक है, this is active hydrogen which may be replaced, which may be donated, जिसको हम डोनेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम को हम डोनेट कर सकते हैं यहाँ पर.
ठीक है, this CH3 it will combine with H leading to the formation of methane. ठीक है, this is methyl magnesium iodide. If it is allowed to react with ethanol, then this hydrogen atom it will get attached here, CH3 and this H, methane will be formed. What is remaining? MgOHI. This is MgI and this is ethoxy group. So MgI and ethoxy group. Okay, if you take a amine, then this is active hydrogen atom. What will be formed? CH3 and this H, methane. ठीक है, बचा क्या है? MgI and NH, C2H5. That will be Mg and this NH, C2H5. Okay. Can you tell me, working on the same grounds, if you take methyl magnesium, you are taking methyl magnesium iodide. Suppose you take ethyl group here. What will you form here now? If ethyl magnesium iodide it is allowed to react with water, what will you form? Yes, can you imagine? Yes, आपने methyl group लिया है. Suppose you are taking, suppose we have taken ethyl group here, C2H5 MgI. It is allowed to react with water. Then what is supposed to be formed here? Yes, anyone? You may think for that. आप सोच सकते हैं इसके लिए. Yes, क्या फॉर्म हो जाएगा वहां पर? और मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के वाटर के साथ में हम रिएक्शन कर रहे हैं. सो व्हाट इज फॉर्म? मीथेन. इफ ethyl magnesium iodide it is reacted with water or ethanol or ethylamine, what will be formed? What will be the product? C2H6. What will be the name? C2H6 का नाम क्या होगा? C2H6 का मीथेन. मीथेन. वेरी गुड. कौन जवाब दे रहा है? मीथेन. शेख तहरीम सर. वेरी गुड. So in this way there will be formation of ethane. ठीक है, मेथिल ग्रुप की जगह अगर हम एथिल ग्रुप ले रहे हैं तो there will be formation of ethane. Okay, so since methane it is evolved in this reaction, it can be measured. इसको हम गिन सकते हैं. Therefore it is a method, it gives a method for the estimation of OH and NH2 group in organic compounds. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर में OH या NH2 ग्रुप एस्टिमेट करना है, आपको मालूम करना है. एस्टिमेट मींस कितनी अमाउंट है. ठीक है, एस्टिमेशन का मतलब अमाउंट कितना है. ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, यानी जितना इथेन मीथेन यहाँ पर इवॉल्व होगा उतना ही अमाउंट ऑफ OH या NH उसके अंदर में होंगे. ठीक है, इसलिए इस मेथड को हम एस्टिमेशन ऑफ OH या NH2 ग्रुप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर आ गए हैं तो. इफ यू हैव डिफिकल्टी यू मे आस्क. यस, नो सर. ठीक है, बुक्स वगैरह लिए लाइब्रेरी से ली है, लाइब्रेरी को कांटेक्ट कीजिए. या लाइब्रेरी से नहीं मिल पा रहे तो फिर आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं डिपार्टमेंट के अंदर में आकर भी. ठीक है, बुक्स हमारे पास है, बच्चों को दे भी सकते हैं बुक्स. डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी का हमारे पास प्रोविजन है. देखिए, अपने पास जो टाइम है उसको आप वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा भी वेस्ट मत कीजिए. मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि छोटे छोटे रिएक्शंस आप लीजिए पेपर के और जेब के अंदर में रखिए. आप कहीं भी चले जाते हो तो चीट आपके जेब में रहना चाहिए. तो इससे क्या फायदा होगा कि लेंदी रिएक्शंस आपको आसानी के साथ में याद हो जाएंगे. सुबह शाम आप जब देखते रहेंगे इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी इजी टू मेमोराइज. तो खाली टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए फार्मूले के अंदर में, उसके अंदर में
दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रिक फॉर स्टडी। इससे आप बड़ी बड़ी चीजें आप चलते फिरते याद कर रहे हैं। जेब के अंदर उचित रखिए जो आपको याद करना है। सुबह के अंदर एक सबक ले लीजिए। सपोज दिस रिएक्शन आई हैव टू कीप इन माइंड, आई हैव टू मेमोराइज दिस, मुझे आज ये स्टडी करना है, ये याद करना है। तो उसकी छोटी सी आप चिट बनाइए, पेपर के ऊपर लिख दीजिए और जेब के अंदर में रखिए। कहीं भी आप चले जा रहे हैं तो हमारे पास टाइम रहता है, वेट करना पड़ता है कि थोड़ा सा टाइम है, पीरियड के अंदर में टाइम है, दूसरे पीरियड के अंदर में टाइम। वो चिट को आप पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार मरतबा आप पढ़िए एंड यू विल गेट दैट बाय हार्ट। आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर फिर एक बार मिलेंगे। तो कल से हमारे ऑफलाइन लेक्चर चालू, वैसे चालू हो चुके हैं, कल से ऑफलाइन लेक्चर चालू होंगे। उसके अंदर फिर एक बार ऑफलाइन मोड के अंदर आपकी मुलाकात होंगी और संडे के अंदर हमारे लेक्चर चालू रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।